Hey guys, welcome back to my channel. So today's video will be little different. It will be a vlog kind video. So in today's video, I'll go through all my lipsticks. So I'll show you my lipstick collection and I'll go through all my lipsticks. I actually wanted to do this from long time. So मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ ही कर लेते हैं. So I'll go through all the lipsticks and I'll see whether I need to get rid of any lipsticks. Like कोई कुछ lipsticks अगर खराब हो गई हैं या dry हो गई हैं तो I'll get rid of those lipsticks and I'll see if I need to give away any of the lipsticks because मेरे पास बहुत सारी lipsticks हैं and I don't use everything. So I'll go through all the lipsticks and we'll see कि क्या मुझे रखना है क्या मुझे नहीं रखना है. So let's start. So first let me show you how I keep my lipsticks. So I have a lot of my lipsticks here in this drawer. As you can see I have a lot of lipsticks here. और कुछ तो I think पैक ही होंगे जो मैंने अब तक ओपन भी नहीं करी है. And then I have few lipsticks here in the display which you see in the background. And let me show you the others. Then I have few lipsticks here in this organizer. So this organizer by the way is from Amara Accessories. They have a lot of makeup organizers and I have a lot of organizers from them. So these lipsticks are actually new. ये मैंने अभी recently purchase करी थी Nykaa से और मैंने अब तक उनको उनकी जगह पे नहीं रखा है. And then I have one organizer here. Yeah, so I have few lipsticks here. So all these are high-end lipsticks. And then I have few lipsticks here lying around like मैंने वीडियो के लिए निकाली थी. It's all over the place you guys. This is my desk actually where I film. There's a lot of reflection. So yeah, there's a lot of mess here but there are few lipsticks as well. So in सबको लेके I need to sort out everything. So first let's start from this one. I'll try to take out everything and then we'll go through all the lipsticks. Mostly I won't get rid of any of these lipsticks. These are yeah, not bad or anything, but yeah, let's just go through. I have all the lipsticks here. मैंने सारे निकाल ली हैं. एक इस वाले ऑर्गेनाइज़र में है लिपस्टिक्स जो मैंने नहीं निकाली है बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर हाई एंड लिपस्टिक्स एंड इन दिस वन. तो दिस वन इज़ ऑल हाई एंड लिपस्टिक्स तो उसको मैं बाद में सॉर्ट आउट करूँगी. उसके अलावा सारी लिपस्टिक्स मैंने यहाँ पे निकाली. सो ऑल माई लिपस्टिक्स आर हियर. सो मैं इसको सेग्रीगेट करने वाली हूँ. सो आई एम थिंकिंग कि इन दिस वन आई विल जस्ट कीप द लिपस्टिक्स विच आई एम गोइंग टू गेट रिड ऑफ एंड in this one I'll keep my liquid lipsticks and here I'll keep in this one maybe the ones which I'm not sure of and my powdered lipsticks and then उसके बाद बाकी सब में हम अच्छे से उसको arrange करेंगे. So let's go through all the lipsticks. I have a lot of lipsticks to go through. I think यहाँ पे ना 200 plus lipsticks होंगी. So let's start. I actually want to see whether कोई lipstick dry हो गई है क्या तो I'm going to swatch each and every lipstick and yeah, let's just start it. So this one is from Colourpop. It's a very beautiful shade. Oh, इसका seeing it? इसका जो एप्लीकेटर है वो निकल गया है. Great. I don't know how I'm going to use it, but ये लिपस्टिक अभी काफ़ी सही है और ये जो शेड है वो भी मुझे काफ़ी पसंद है. So I'm gonna keep it. Maybe I'll use some other applicator to apply this. इट्स अ वेरी अफोर्डेबल फॉर्मूला. मैंने उसके ऊपर डिटेल रिव्यू शेयर किया हुआ है. शेड्स काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी अफोर्डेबल फॉर्मूला है. थोड़ा सा ड्राइंग है बस, बाकी अच्छा फॉर्मूला है ये.
सो ये ड्राई हो चुकी है थोड़ी, कलर पॉप की लिपस्टिक है और ड्राई हो चुकी है. आई जनरली कांट यूज़ इट बिकॉज इट वॉशेस मी आउट, बट आई जस्ट कीप इट टू यू नो लाइटन एनी शेड इफ आई वांट टू. सो अभी रख लेते हैं इसके लिए. ओके, दिस वन इज़ फ्रॉम मैक्स फैक्टर. दिस लिपस्टिक शेड क्या है इसका आई डोंट नो, बट ये जो शेड है वो काफ़ी लाइट है मेरे लिए, और मेरे पास दूसरी काफ़ी लिपस्टिक्स हैं जो काफ़ी लाइट है. सो दिस वन आई एम going to give it to someone, so I'll keep it in this pile here. This lipstick is so pretty. ये जो Fenty Beauty की जो ये लिपस्टिक रेंज है वो काफ़ी अच्छी है और कितना प्रिटी लगता है. I keep it in my display, that's why. So this is the lipstick from NYX Lip Bronzer lipstick. ये जो शेड है वो बहुत ही प्रिटी शेड है. I hope you can see. शेड काफ़ी अच्छा है, but I have a lot of similar shades, so let's see. I'll keep it in like I'm not sure pile for now. It's a very beautiful formula, Lakme ka ye Absolute Repair. Gonna keep it. So this is the shade Mulberry Fizz. It's a beautiful shade, but I don't wear this kind of shade nowadays. So yeah, I'll keep it in my I'm not sure pile, and I'll see कि अगर कोई और शेड होगा इस तरह का तो maybe I'll see कि whether I want to keep it or not. अभी के लिए इस टाइम में रखना. नायका की लिपस्टिक है ये अल्ट्रा मैट लिपस्टिक. ये जो नायका की रेंज है लिपस्टिक की मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है. उनकी जितनी भी रेंजेस है उसमें सबसे ज़्यादा फेवरेट रेंज है मेरी है, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ शेड्स, सो आई एम गोना कीप इट. ओके, इसका भी एप्लीकेटर कैन यू सी, इसका भी एप्लीकेटर टूट गया है. दैट्स बैड. इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ शेड, कूल टोन शेड है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये. This one is also very beautiful lipstick from NYX Lip Bronzer lipstick in the shade Exotic. काफ़ी अच्छा शेड है ये. ये जो शैम्बोर की जो रेंज है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है. सी दिस वन, वेरी प्रिटी शेड. I have a feeling that this video is gonna be too long because I am talking about each and every shade. These are 4 lipsticks from Colourpop Lippy Sticks. ये जो फॉर्मूला है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और सारे शेड मुझे काफ़ी पसंद है, तो आई डोंट इवन नीड टू स्वॉच दिस. आई एम डेफिनेटली कीपिंग दिस. This one is one of my favorite shade from this range, Grace 07 Grace. बहुत ही pretty shade है ये. तो मुझे लग नहीं रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा लिपस्टिक्स निकाल पाऊँगी because it's very difficult for me to you know let go things. So yeah.
सो ये जो लिपस्टिक है रिमल की, ये ऑलरेडी ड्राई हो चुकी है. मैंने इसको ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया. आई थिंक 2-3 बार यूज़ किया होगा एंड इट्स ऑलरेडी ड्राइड. आई एम सैड. इट्स अ ब्यूटिफुल शेड. सो आई हैव वन मोर ड्राई लिपस्टिक. दिस इज़ फ्रॉम NYX. ये भी ड्राई हो चुकी है. आई एक्चुअली लव दिस फॉर्मूला, दिस फेसेस कैनेडा. ये जो लिपस्टिक्स हैं वो दिखने में बहुत ही प्रिटी लगती है. जो पैकेजिंग है प्लास्टिक की पैकेजिंग है बट स्टिल इट लुक्स वेरी प्रिटी. और ये शेप वगैरह मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है. आई रियली लाइक दिस लिपस्टिक. आई हैव 3 शेड्स और तीनों ही शेड्स ना बहुत अच्छे हैं. ओके ये जो स्मैश बॉक्स की लिपस्टिक है वो भी ड्राई हो चुकी है. आई एम रियली डिसअपॉइंटेड एक्चुअली बिकॉज ये जो लिपस्टिक्स है मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है. और स्मैश बॉक्स की लिपस्टिक के साथ ये प्रॉब्लम है, ये वाली जो इनकी ऑलवेज ऑन लिक्विड लिपस्टिक रहती है बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाती है. ये मिनी साइज़ है और मैंने उसको शायद 2 बार यूज़ किया होगा मुश्किल से. इट्स टोटली ड्राइड. इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग बिकॉज दीज लिपस्टिक्स आर सो एक्सपेंसिव. जो लिपस्टिक है वो काफ़ी टाइम से टूट चुकी है बट आई एम नॉट एबल टू गेट रिड ऑफ दिस. दिस इज़ द शेड एलिमेंट पिंक. जो जब ये वाली रेंज रिलीज़ हुई थी Maybelline की तो ये जो शेड है वो बहुत ज़्यादा फेमस था एंड मिल ही नहीं रहा था. तो इसको मैंने एज अ सोवेनियर रखा हुआ है एंड आई डोंट थिंक आई एम गोना गेट रिड ऑफ दिस थिंग बिकॉज देर आर सम मेमोरीज अटैच टू फ्यू थिंग्स. सो या आई विल कीप इट. येस आई एम ग्रोस लाइक दैट. Such a pretty packaging, right? Yeah. Oops. Okay, lipstick is here. This is my current most favorite lipstick. This is from Lime Crime. The shade Cindy. इतना beautiful color है ये. मैं swatch करके बताती हूँ. See, can you see? This one such a pretty shade. मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये. So definitely keeping it. I have one more dried lipstick and it's breaking my heart because it's from Kylie Cosmetics. I got a set of 5 lipsticks, 5 mini lipsticks और ये ड्राई हो चुकी है टोटली. और मैंने इसको आई डोंट थिंक कि 1-2 बार से ज़्यादा यूज़ किया है. पता नहीं किसी को तो 1 बार भी यूज़ नहीं किया होगा. ये जो सेट में बहुत सारी लिपस्टिक थी और ये ड्राई हो चुकी है. तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द लिपस्टिक्स विल बी ड्राइड. सो वेरी सैड. दिस लिपस्टिक, ये जो शेड है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद था. दिस इज़ फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड. दिस इज़ द शेड सैंडस्टोन. फोकस कर रहा है क्या कैमरा? यस. सो दिस इज़ द शेड सैंडस्टोन फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड.
ये मुझे शेड काफ़ी पसंद था. आई यूज्ड टू वेयर दिस शेड अ लॉट. बहुत पुराना हो गया है और एक्सपायर भी हो गई है. बट आई एम गोना कीप इट एज अ सोवेनियर. वन मोर लिपस्टिक जो ड्राई हो चुकी है फ्रॉम स्मैश बॉक्स. दिस इज़ द शेड गुलाबी. बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है ये. एंड आई एम ट्राइंग टू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ दिस शेड. तो अभी इसको मैं हटा नहीं रही हूँ. आई एम स्टिल कीपिंग इट सो दैट जितना भी मैं इसका यूज़ कर पाऊँ आई विल डू इट. बिकॉज ये शेड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. Camera's battery actually drained, so I completed everything of camera. So here are all the lipsticks. इतनी segregated नहीं लग रही है, I know. So यहाँ पे सारी bullet lipstick and crayon lipsticks हैं. Here are the swatches. अभी मैंने remove कर लिया है काफ़ी कुछ. Yeah, so those are the crayons and bullet lipsticks, and here are the liquid lipsticks. ये सब glosses हैं, and those are the ones which I'm not sure of whether I'm going to keep or not, and these are the ones which I'm going to give away or throw. जो कुछ तो dry हो गई हैं तो I'll throw them out, and कुछ जो shades हैं जो मैं use नहीं करती हूँ या फिर कुछ ऐसे shades हैं जो repetitive हैं तो I'm gonna give it to someone because lipsticks are still in the good condition. So this is the final results. Now I'll arrange these lipsticks and I'll keep it back in the drawers and the other places which they are supposed to be, and then I'll show you.